Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of New Secondary Mathematics 1 or D1 updated edition. Dear students, today we will start exercise 1B and we will attempt the first question of it. First question dear student हमारे पास है find the highest common factor of each of the following sets of numbers. And it has 4 parts. Dear students, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी जिसमें HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने की डिफरेंट मेथड्स बता दिए गए हैं. सो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड ऑल्सो विजिट फेसबुक पेज फॉर द PDF सोल्यूशन. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद find the highest common factor, mean to say HCF, of each of the following set of numbers. And the first part is 12 and 30. Dear students, first part को मैं 2 मेथड से करूँगी and the remaining parts को मैं एक ही मेथड से करूँगी. 2 मेथड बताने का मकसद ये है कि आपको दोनों मेथड क्लियर हो जाए और जो इजी मेथड है वो आप अडॉप्ट कर लें. मेथड 1 हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन, that we can find the HCF by prime factorization, and method 2 हमारे पास है by division. प्राइम फैक्टराइजेशन पे डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी. सो लेट्स फाइंड HCF by prime factorization first. स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपने 12 एंड 30 जिनका आपने HCF फाइंड करना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स ऐसा आपने नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों को डिवाइड करता है और वो हाईएस्ट होगा. यानी उससे लोएस्ट, उससे कम नंबर्स तो उससे लोएस्ट नंबर तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर तो मिल जाएंगे जो इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे, लेकिन वो हाईएस्ट होगा. उसके बाद आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे. सो आपने टेबल की फॉर्म में लाइन लगा के 12 आपने लिख लिया और इसी तरह से हम 30 को भी लिख लेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सो प्राइम फैक्टर्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2. So 2 6 times 12 and then 2 3 times 6 and then 3 1 times 3. It's like an LCM method. So now we will do it's a same for 30 and it will start from 2 to 15 times and then 3 5 times and then 5 1 times. Dear students, you can stop here as well and you can write 2, 3 and 5 or you can do in this way. अब स्टूडेंट आपके पास 12 के भी प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं और 30 के भी प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं. हमने जो प्राइम फैक्टर एक्सट्रैक्ट किए हैं 12 के वो हैं 2 × 2 × 3 एंड 30 के जो हमने प्राइम फैक्टर एक्सट्रैक्ट किए हैं that are 2 × 3 × 5. डियर स्टूडेंट्स, हम इसको इंडेक्स नोटेशन में भी लिख सकते हैं जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लिख के आपको बता दूंगी. नाउ वी कैन चेक इट आउट फॉर कॉमन फैक्टर्स. CF कॉमन फैक्टर्स आप हाईलाइट कर लें और इट्स ओके फाइन विद. नाउ दीज आर द कॉमन फैक्टर्स 2 and 3. So the highest common factor will be 2 × 3 equal to 2 × 3 6. डियर स्टूडेंट्स, मैं इसी क्वेश्चन में आपको इंडेक्स नोटेशन से भी बता देती हूँ. जैसे कि 12 के हमने फैक्टर्स लिखे
2 multiply 2 multiply 3, like 2 times we have 2 and then 3, and here we have all the digits, all the prime factors are single one, so we can write in this way. अब हम सेम जो अपने कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लिख लेते हैं. आपके पास HCF क्या आ जाएगा? One common factor is 3, and now here the index is 2 and here the index is 1. So in HCF you have to pick the base with the smallest index, the common with the smallest index. So smallest index is this, that is 2. So we have 6. So if the prime factors are written in the form of index notation, you can also find the highest common factor. Now moving towards the next method, that is method 2, and it's by division. So dear students, by division what you have to do, आपने जिन नंबर्स का, जिस सेट ऑफ नंबर्स का HCF फाइंड करना है, आपने उसको एक ही टेबल में लिख लेना है. नाउ आप ऐसा प्राइम फैक्टर फाइंड करें जिस पे ये दोनों डिविजिबल हों. आपको डिविजिबिलिटी चेक, यहाँ पे डिविजिबिलिटी चेक और रूल्स यहाँ पे बहुत हेल्पफुल साबित होंगे. Now the last digit is 2 and here the last digit is 0, so we can do it by the 2 to 6 times and then to 15 times. Now we can't do it by 2 because here we have the last digit's odd, so we will check it for 3. Yes, we can do it 3 2 times and then 3 5 times. Now student, I get both the prime and there is no other prime factor which divides these two both, so we have to stop here, and the HCF will be this 2 multiply 3, we have 6, so HCF will be 6. So now hopefully आपको both method जो हैं वो clear हो गए होंगे. अब next जो questions होंगे उनको मैं एक ही method adopt करके आपको समझाऊंगी. Dear students, B part is very much easy. उसको आप easily जो है वो solve कर लेंगे. C part मैं attempt कर रही हूँ and I will do it by division method. So I will write it in the table 15, 60 and 75. Now I have to find the prime factor जिस पे ये सब divisible हों. यहाँ पे अब मैं divisibility check लगाऊंगी. आपके पास the last digit is 5, 0 and 5, so I can do it with 5, not by 2. Okay, let's check for 3 as well. 2 से तो मैं नहीं कर सकती, 3 से check करते हैं. 15, 5 plus 1 6, 6 can be divisible by 3. 6 plus 0 6, we can divide it by 3, and similarly we can. So 3 5 times 15, 3 20 times, and then we have 3 2 and then 3 5 times 15. 3 5 times 15. Now we can do it by 5, so we can do it by 5 5 5 4 times and 5 5 times. Now dear students, we have to stop it here because there is no other prime factor which we can find for 4 and 5. So now my HCF will be 3 multiplied by 5, it's 15. Now D part and the last part of question number 1, 143. Now student, I will do division method again. You can do by prime factorization as well, but not listing method at grade 6 because you have done it in the previous classes. Okay, so now check 2, we can't do it because the last digit is not even. Then 3, 7 plus 7 14, it's not divisible by 3. 9 plus 1 10, it's not divisible by 3. 5, no, the last digit is not 0 and 5, तो हम इसको 5 से भी नहीं कर सकते. 7 से हम 7 like we can do this one, but we can't do this one. So like this one we can't do it by 7.
these two we can do it by 7. Now 11 we can't do it. So I'm not finding any of the prime factor. So but I know that एक फैक्टर ऐसा है जिस पे ये सब डिविजिबल होंगे. वो कौन सा फैक्टर है? 1. क्योंकि 1 तो इन तमाम का फैक्टर है. इसके अलावा मुझे कोई फैक्टर नहीं मिल रहा. इसका मतलब है कि आपके पास यही फैक्टर यानी कि 1 जो है वो हाईएस्ट है. होपफुली स्टूडेंट्स आपको तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे. सो वीडियो को आपने शेयर कर देना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी. एंड सेकेंडली आपको एक क्वेश्चन जिसकी आपको ट्यूटोरियल चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं.